Hello everyone. Welcome back to our current affairs initiative, Diya Prelims for the upcoming CSC Prelims 2023. From today, we are resuming this initiative. There was a short break because I was on paternity leave और आज से हम इसको resume करते हैं. And from today, it will be coming up on daily basis as usual as it was coming earlier. And अभी अगर हम देखें तो दिसंबर has started. दिसंबर से लेके मई में हमारा एग्जाम है. सो एग्जैक्टली वी हैव 6 months, दैट इज 180 days. एंड विद एवरी पासिंग डे डेज कम होते जाएंगे, प्रीलिम्स का प्रेशर बढ़ता जाएगा, मेंस से आप लोगों की प्रिपरेशन दूर होती जाएगी. बट स्टिल वी विल एडवाइस कि आप फरवरी तक मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए, कंटेंट पे फोकस कीजिए, अपने ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए और स्लोली ग्रेजुअली जनवरी से अभी से एनीवेज वी आर डूइंग प्रीलिम्स प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स, PYQs. If you all are there, you have joined our Telegram channel. There we are posting daily current affairs questions and PYQ questions. So ऐसा नहीं है कि prelims की preparation हो नहीं रही है, ठीक है. So we are already in touch with the prelims, but mains की preparation का touch नहीं छोड़ना है. So this is a small message I wanted to give because exactly 180 days are there. Now coming to the today's topic. Today's question. So it is with respect to this Borlang Yatra movement. And what is it? We will discuss it. First we will take a question and then we will see, try to understand the question, we will attempt and then we will discuss it in detail. So the question is, consider the following statement about the Borlang Yatra movement. Two statements are there. The first one is Borlang Yatra is a festival celebrated by God tribes. And the second one is the movement is for the revival of millet crops among tribes. So अब इसमें से क्या चूज करना है? करेक्ट चूज करना है. So हमेशा केयरफुल रहना है whether the question is asking correct or incorrect, and then you have to tell only one is correct, two is correct, both are correct or none are correct. ठीक है? So you take your stand. If you know, well and good. If you don't know, then also take a stand and we'll see. अपने logic लगाओ, elimination लगाओ, educated guess lagao, then we will see. Okay, now let's start the discussion. So first of all we should know that why it is in news. What we are doing here, we are taking the questions from the current affairs and we are taking the issues, topics from the current affairs and that only we discuss as part of this Diya Prelims. So this was the article in the Hindu, millets in the mainstream, how Odisha's Kutia Kond tribe. So now you know the first option is right or wrong. So it is Kutia Kond's tribe rediscovered a palate for poor man's food. मिलेट को पुअर मैंस फूड बोला जाता है. आज की डेट में फाइन ग्रेन्स खाए जाते हैं, व्हीट, राइस, ऐसे जो कोर्सर ग्रेन्स होते हैं वी आर नॉट ईटिंग. बट इफ यू विल डिस्कस विद योर पेरेंट्स, दे यूज्ड टू ईट द कोर्सर ग्रेन्स, रागी, कोदो, जवार, बाजरा, राइट. आप जिस रीजन से भी हो, आपके रीजन में बी इट द नदर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, हर स्टेट में, हर रीजन में कोई ना कोई मिलेट प्रोड्यूस होता था और आज भी होता है. बट अभी धीरे धीरे उसका ट्रेंड चला गया है. सो बिकॉज ऑफ दिस एंड एज यू कैन सी देयर इज अ मूवमेंट एंड this movement has led to, this festival has led to the revival of the millets in Odisha. So we will understand, we will discuss in depth, in detail. Let's see. So when we talk about this Borlang Yatra movement, so it became a movement. But before that, this movement is built around the Borlang Yatra. And this Borlang Yatra is a traditional festival, traditional annual festival of Kutia Kond tribes in Odisha. So a traditional festival of Kutia Kond tribe. And there what they do, हर साल मिलते हैं, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं. लेडीज विल सिंग सॉन्ग, दे विल एक्सचेंज द सीड्स, द ट्रेडिशनल सीड्स जो मिलेट्स के होते हैं, दे एक्सचेंज. और कोई ट्राइब, कोई फैमिली किसी प्रकार की सीड्स को प्रिजर्व करता है, देन अदर कम्युनिटी दे विल हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स, सो दे एक्सचेंज दोज सीड्स. ठीक है. सो दिस इज अबाउट, बिकॉज that has been their staple food for the tribal people in Odisha. And slowly gradually जब ये PDS आया और जो मार्केट में अवेलेबिलिटी होने लगी कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट की, then these crops, the importance of these crops reduced
एंड देन ट्राइबल पीपल इसको एक सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह ट्रीट करने लगे। कमर्शियल पर्पस पे वो कर नहीं सकते थे बिकॉज मार्केट में डिमांड नहीं थी, लेबर कॉस्ट बहुत लगता है। सो दे स्टार्टेड ट्रीटिंग इट कि भाई ठीक है हमें कंज्यूम करना है, सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह उसको ग्रो करने लगे। सो दिस इज अबाउट this. So it is a traditional festival. But with the help of this Millet Network of India, MINI, it is a forum which has been founded by Nirman, and Nirman is basically one NGO. So इस NGO की वजह से जो ये बुरलांग यात्रा ट्रेडिशनल फेस्टिवल था इसको एक मूवमेंट का रूप दिया गया, और इस NGO का बहुत बड़ा रोल है। So in GS2 from mains point of view, when you read a role of NGOs in the development, this example you can quote. Okay, definitely prelims के लिए पढ़ ही रहे हैं, but we can quote it as an example also. So this is how this traditional festival was converted into a movement, and in 2017 Odisha government ने millets को promote किया for nutritional security, for food security. So that is how also it got promoted. And coming to the Odisha's Kutia Kond tribe, they are one of the PVTGs. और हमें पहले भी पता है कि देर आर ऑलमोस्ट 75 PVTGs इन इंडिया, एंड सबसे ज्यादा PVTGs वेयर आर दे लोकेटेड, दे आर बेस्ड इन ओडिशा। ऑलमोस्ट 13 PVTGs आर देयर इन ओडिशा, ओके, पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, एंड दे आर फाउंड इन कालाहंदी एंड कंदामहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। बट व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट मिलेट्स? व्हाई सडनली सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू मिलेट्स? Few days back we had our global hunger index. We already know about our nutritional security. We know about the importance of food security, right? And from many years, 2016 में इंडिया ने proposal दिया था that we should celebrate International Year of Millets. Then finally United Nations General Assembly, FAO, इन लोगों ने अप्रूव किया, and in 2023 we are celebrating International Year of Millets. That was India's proposal. So आने वाला जो next year है, that is International Year of Millets. And why India was promoting that? Not only because of the nutritional security, food security, but also because India is the largest producer of the millets in the world. 20% of the global production and 80% of Asia's production. So this is another importance. But if we discuss about the importance of millets from nutritional security point of view, आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करोगे तो भी आपको पता चलेगा। हर रीजन की अपनी अपनी जो ये मिलेट्स हैं इनकी एक इंपॉर्टेंस है। कैल्शियम में रिच होते हैं, मैग्नीशियम में रिच होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट रागी, रागी इज नोन टू हैव हाइएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल द फूड ग्रेन्स। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिलेट्स. So this is about millets, and millets are also gluten free. उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है. So अभी व्हीट खाने से, राइस खाने से लोगों को ग्लूटेन एलर्जी भी हो रही है. लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज हो रहा है. So if we talk about that, so millets play very important role in reducing the sugar, the blood sugar as well. So they help in maintaining the lifestyle diseases, reducing or eliminating. So that is there. They are also known as super crop because जो ये climate change हो रहा है, climate change resilient हैं वो, right? Because they need less water, कहीं भी grow कर सकते हैं, terrain कैसी भी हो, water कैसा भी हो, temperature कैसा भी हो, they can grow there. So that's why they are called as super crop. Their carbon and water footprint is very, very less. Okay, so that is another added advantage. And India ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, एंड इट इज नोन एज INSIMP. नाउ UPSC has already asked a question on this initiative in 2016. If you will go and revise the PYQs, you will get it, and we will also post the PYQ series as part of PYQ series in our Telegram channel. Okay, so this is why we are discussing. See how everything is interlinked. Burlang Yatra movement. From there we discussed about the movement, the festival, where, who, why it was in news. Then millets, why millets, importance of millets, and finally एक initiative भी है उसका. So this is how you should prepare any topic from the current affairs, or in fact any topic from prelims point of view.
that then only you will be able to develop a 360-degree analysis. Okay. Now let's see the question again, and now you have your answer. Let's revisit the question. Consider the following statement about the Burlang Yatra movement. Burlang Yatra is a festival celebrated by Gond tribes, you know, Kutia, Kond tribes. The movement is for revival of millet crops among tribes. Yes, definitely it is. And वहाँ क्या हो रहा था, उनका स्टेपल फूड था, एंड स्लोली ग्रेजुअली दे वर लूजिंग आउट द सीड्स. इंपॉर्टेंस तो थी, उनके कल्चरल हेरिटेज, उनके क्विजीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था वो, बट स्लोली ग्रेजुअली दे वर लूजिंग आउट. और वो भी बिकॉज ऑफ द shift in the dietary pattern towards wheat and rice, they were also getting the burden of disease was increasing within tribes also. The people who have anthropology optional, they read all these things in detail. So which of the above is or are correct? Only one is correct, that is the movement is for the revival of millets among tribes. So millets के लिए है, so the answer is only 2 is correct, that is B. Okay. So this is it with respect to today's video. Hope you all had good learning, and like this, go back and whatever we have covered, we have created a playlist of all the DIA prelims current affairs from mains point of view, from prelims point of view. Please check the playlist. In fact, we have also come up with a course, already we have discussed about it, current affairs course from prelims and mains point of view for CSE 2023. It is a 13-month long program. We started in August, and yeah, these are the features. You can check the detail, and the first 2 classes are free. You can check the detail in the comment section as well, in the description box. This is it, guys. Thank you, and stay tuned. We will come up with the interesting topics like this, and cover करेंगे prelims के point of view से. 180 days. Remember that अभी कुछ भी नहीं छोड़ना है. Last moment में कोई regret नहीं होना है. So balance your mains and prelims preparation, and अच्छे से पढ़ो. Don't waste your time. Take care. See you all. Bye bye.